Good morning, all of you, and welcome you all in this platform of StudyIQ PC channel. I hope audio and video both are working fine. So please confirm those who are online. We'll discuss about national and international news. And today is 23rd of July. Okay, so let's go for the today's headlines. कौन headlines गुड़िक अच्छे देखिबा. First of all, PM विकास स्कीम ऊपर डिस्कस करिबा. Second, समुद्र प्रदक्षिण INS Malvan, RO annual report on mine closure, Mission Vatsalaya scheme, Inspire program, re-employment opportunities for senior citizen, PM Yasosi and Aravali panel. Good morning everyone. Devasis, thank you for the response. Let's start the discussion. First of all, the PM Vikas scheme विषय देखिबा. PM विकास स्कीम होची गोटे फ्लैगशिप स्कीम, गोटे इंपोर्टेंट स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. एंड स्कीम को अप्रूव केबे करा जायतिला? जनवरी 2025. ऑब्जेक्टिव कोन ना माइनॉरिटी कम्युनिटीज पाई. माइनॉरिटी कम्युनिटीज आपण जानिथिबे कॉन्स्टिट्यूशन रे एबले डिफाइन करा जाय नाही. बट मेजॉरिटी जदि आपण हम देश रे देखिबे हिंदूज आर मेजॉरिटी. से हिंदू मेजॉरिटी को छाड़देले बाकी जेते आपणकर कम्युनिटी रहिले रिलीजियस रिलीजन बेसिस रे समस्ते माइनॉरिटी, रिलीजन माइनॉरिटी हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, ये सब माइनॉरिटी सहित एसोसिएट हो. तेणु सेमानक पई फोकस करा जिवो कोथरे स्किल डेवलपमेंट को नेकी, एजुकेशन को नेकी, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेशन करा जिवो. तेणु काइंड ऑफ जेकोसी माइनॉरिटीज कम्युनिटी हो, से कम्युनिटी रो लोक मानक पई बेटर लाइवलीहुड जोटा आमे कहूचे थ्रू बेटर एजुकेशन एंड बेटर एंटरप्रेन्योरशिप, एटा को फोकस करा जाउची पीएम विकास स्कीम अंडर. तीनोटी कंपोनेंट गोटे होची स्किल एंड ट्रेनिंग, सो दैट एम्प्लॉयबिलिटी ही परिबो, सो दैट आपण मार्केट रे गोटे बेटर जॉब पाई परिबे, बेटर वेज सैलरी मिली परिबो, बेटरमेंट ऑफ लाइफ ही परिबो. वुमेन लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, महिला सशक्तिकरण को भी फोकस करा जाइछि. कारण महिला जेकोसी कम्युनिटी भी होंतु से वल्नरेबल, जेकोसी कम्युनिटी होंतु से माइनॉरिटी होंतु कि मेजॉरिटी होंतु. कारण आम सोसाइटी अक्रॉस द डिफरेंट कम्युनिटीज, से माइनर हो, minority on the basis of language, minority on the basis of religion, amar hoji patriarchal society, male centric society. तेणु आमको फोकस करने को पड़ो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकिन. तेणु वुमेन एम्पावरमेंट को लेकिन वुमेन लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप. जमती देखिए वुमेन एम्पावरमेंट रो गोटे पार्ट होची बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑल्सो. ता सहित आम फोकस करुचे क्या एजुकेशन, शिक्षा. कारण शिक्षा होची से जिनस जोटी की मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास पाखे कौन सी ऑप्शन न था एक्सेप्ट शिक्षा. कारण शिक्षा होची से इंस्ट्रूमेंट जहाँ थ्रू रे से आपणकर सोशल मोबिलाइजेशन करि परिबे, जहाँ थ्रू रे से वन स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी रु सेकंड या नेक्स्ट स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी को जाई परिबे. तेणु एजुकेशन आमर से दरकार. तेणु एजुकेशन को भी मध्य मेंशन करा जाउची माइनॉरिटी कम्युनिटीज को पाई. जदि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी को देखिए गोटे इंटीग्रेटेड या इंटर कन्वर्जेंस मैनर माध्यम रे एटा को इम्प्लीमेंट करा जाउची. 59 प्रोजेक्ट्स गुड़िक अच्छी जोटा कि इम्प्लीमेंट करा जाउची थ्रू डिफरेंट मिनिस्ट्री जो माने माइनॉरिटी सहित डील करुछन. प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी मॉनिटर करा जाउची. नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जे स्किल को इनकलकेट करिवो. अवार्डिंग बॉडीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ये सबू आपणकर रहुचंती जो माने विकास स्कीम रे भागीदार अछन. चैलेंजेस कौन अच्छे ना सबुठु बड़ चैलेंज होची जो
आमर जो एक्सपर्ट्स मान कहवा कथा हूँ जो स्किल सेट आम इंडिया रे दौचे जो डिग्री आम दौचे से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रा हो पारुनी दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम अच्छी एजुकेशन सिस्टम अच्छी आज पर द रिक्वायरमेंट हो पारनी तेणु आमको अपग्रेड करने को पड़ो आमर स्किल सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम तेणु इंडस्ट्री लिंकेज को स्ट्रेंथन करने को पड़ो सेकेंड हूँ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कौन ना जमती स्किल या एजुकेशन पर जॉब वेल प्लेस्ड हवा दरकार सो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज अप्रेंटिसशिप्स एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग सो बेसिकली अप्रेंटिसशिप एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द सेंस आप देखिए वर्तमान इंटर्नशिप रो जो ट्रेंड अच्छी काफी बढ़ी जाइए बिफोर द जॉब ड्यूरिंग द स्टडी किसी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने एंड साइमल्टेनियसली वेरीफाइड प्लेसमेंट्स जो वेल प्लेस्ड मुझे कहती एंड एमर्जिंग एंड फ्यूचर स्किल डिमांड को भी फुलफिल कर एमर्जिंग एंड फ्यूचर स्किल डिमांड एम्प्लॉयमेंट को केमती बढ़ा जाई पारिबो ऑब्वियसली इंडस्ट्री अलाइंड स्किल दरकार इंडस्ट्री रो कौन रिक्वायरमेंट अच्छी ट्रेनिंग थ्रू रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री लिंक्ड पीआईएस इम्पैक्ट जो असेसमेंट आपंकर अच्छी आईआईटी हो आईएम हो एनआईटी हो सेगुड़ को आमको इंडस्ट्री सहित इंटर कन्वर्जेंस कर सो दैट जो थियोरिटिकल पार्ट अच्छी नॉलेज पार्ट ताऊपर आमे कमांड आनी परिबा ट्रेनिंग मध्य प्रोवाइड करा जाई परिबा प्लेसमेंट को फैसिलिटेट करा जीवो जॉब दिया जीवो लाइवलीहुड दिया जीवो करियर काउंसलिंग फॉर ट्रेनीज जो मैंने अछंती सेमान को पई हमें ऑप्शंस बाहर करिबा को जगह रे सेमान निजो को एंगेज करि परिबे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग बिजनेस मेंटर एंड उद्यमी मित्रस सपोज आपण गोटे बिजनेस स्टार्ट करने को चाहूँगी आपण चाहूँगी गाइडेंस आपण को उद्यमी मित्र जी थी से वॉलंटरली आपण को गाइड करिवो एंड क्रेडिट लिंकेज विद द नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्रेडिट लिंकेज ओके नेक्स्ट को नेक्स्ट टॉपिक हूँ समुद्र प्रदक्षिण रक्षा मंत्री फ्लैग्स इन फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन देखिए समुद्र प्रदक्षिण वेरी वेरी इंपोर्टेंट द फर्स्ट एवर प्रथम थर पर ट्राई सर्विसेस आर्मी एयरफोर्स नावल ट्राई सर्विसेस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन ओके ऑल वुमेन कौन सी मेल ना फ्लैग्ड इन बाय द डिफेंस मिनिस्टर Rajnath Singh 22 July 2026 and from Mumbai vessel India Army sailing vessel त्रिवेणी तो त्रिवेणी रे से माने कौन करिवे एक्सपेडिशन को कंप्लीट करिवे 9 जण मेंबर अछंती ऑफिसर्स इंडियन आर्मी नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स से मानकर ड्यूरेशन रहिबो 314 days एवं लेंथ या जो डिस्टेंस मैंने कवर करेंगे 25,500 नॉटिकल माइल्स एवं अक्रॉस द 4टी ओशन ने से सेल करेंगे एंड सक्सेसफुली मेड ऑल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्राइटेरिया फॉर सर्कम नेविगेशन बाय क्रॉसिंग ऑल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इक्वेटर ट्वाइस इंटरनेशनल डेट लाइन 3 ग्रेट केप्स मध्य गुड होप हॉर्न एंड लिविन तेणु ये पार्ट गुड़ी को से कवर करेंगे इक्वेटर को दिथर से क्रॉस करेंगे स्पेशल अचीवमेंट कौन ना सक्सेसफुली नेविगेटेड द ड्रेक पैसेज राउंडेड केप हॉर्न अर्निंग द क्रू मेंबरशिप इन द prestigious केप हॉर्नर्स fraternity and honored reserve for sailors who complete one of the world's toughest maritime passages. ओके सो क्रू मेंबरशिप मानक पई जो प्रेस्टिजियस केप हॉर्नर्स फ्रैटर्निटी जो माने अछंती से माने तांको पई ऑनर रे
कौन करूछंती या जो क्रू मेंबर अछन से ऑनर करा। सो इट शोज द नारी शक्ति इन आर्म फोर्सेस एंड पर्टिकुलर द ट्राई सर्विसेस तीनोटी जाक सर्विसेस वाला अच्छा that shows the unity, the togetherness, jointness, and interoperability. And joint management is quite difficult and reflects the vision of Viksit Bharat, a new India, and highlight the importance of joint operations and multi-domain coordination. मिलिटरी डिप्लोमेसी भी आप देखिपारे। त्रिवेणी हूँ इंडिया रो फ्लोटिंग एम्बासेडर कहीं ना इट्स ए काइंड ऑफ ए सॉफ्ट पावर आप कहीपर। ऑल वुमेन क्रू जोटा कि एक्सपेडिशन करेंगे अक्रॉस द ग्लोब। तेणु दैट शोज इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज, military professionalism, and goodwill with the friendly nation, and this shows the India's soft power. ये सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर कहले कौन? हार्ड पावर हूँ मिलिटरी पावर, सॉफ्ट पावर हूँ कल्चर, द वैल्यूज। ओके, पॉलिटिकल साइंस रे गुड़िक आपन को पढ़ा मिले। नेक्स्ट को जीवा INS मालबन was commissioned 22 July at Karwa. Air Chief Marshal AP Singh, Chief of the Air Staff, and it is the second indigenously designed and built Mahe class anti-submarine shallow watercraft. Mahe class anti-submarine warfare cell. It is the sixth of 16 anti-submarine warfare shallow watercraft to be commissioned into the Indian Navy, built by Cochin Shipyard Limited. एटा को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ही तैयारी करा जाइछि। एयर चीफ मार्शल किए अछंती AP सिंह अछंती एवं एटा होछि सेकंड इंडिजिनसली बिल्ड दैट इज माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। माहे क्लास मालबन ना कहीं दिया गला कहीं ना मालबन historical coastal town in Maharashtra. The town is closely associated with the maritime legacy of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Also commemorates the earlier INS Malban, an inshore minesweeper that served until 2003. Okay. तो मालबन हूँ मालबन पुराना ना हूँ महाराष्ट्र। यदि इंडिजिनस डेवलपमेंट को देखा 80% हूँ इंडिजिनस कंटेंट, 80% 80 भाग निज ज्ञान कौशल टेक्नोलोजी को नहीं। आत्मनिर्भर भारत को फोकस कर ओबियसली एंड इंडिया जदि ये सक्सेसफुल हो गला तो ताको हेल्प कर नाभाल डिजाइन रे, डिफेंस से बिल्डिंग रे, सिस्टम इंटीग्रेशन रे एंड इंडिजिनस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग रे। Operational capability जो देखिए INS Malban is designed for underwater surveillance. That means पानी भितर रही कि से तार कौन खोजिबो तार इंफॉर्मेशन गैदर करिब। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन एंड माइन वॉरफेयर. So these are what we call the operational capabilities. Importance कौन ना coastal defense, littoral security, maritime domain awareness, surface warships, submarine and naval aviation asset एगुड़ी को jointly operate करी पारिब. Next को जीवा RO annual report on mine closure. India's first report on scientific mine closure and repurposing practices. देखिए कौन RO कौन annual report on mine closure मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा एटा को रिलीज करा जाइथिलो. ये भारतर प्रथम कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट रिगार्डिंग माइन क्लोजर एंड माइन रीपर्पसिंग. प्रथम रिपोर्ट एटा प्रथम डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग व्हाट आपनकर
mine closure and mine repurposing. Okay, and then prepared by the coal controller organization. जो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी से ही प्रिपेयर करथिल। आरोर की हाइलाइट्स गुडी को देखिबे, डॉक्यूमेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन of 42 scientifically closed coal mines। कौन कौन कवर करूची ना, साइंटिफिक माइन क्लोजर प्रैक्टिसेस, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, सस्टेनेबल पोस्ट लैंड यूज, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज एक्सेट्रा। सो बेसिकली जो माइन कोल माइन एरिया गुड़िक अच्छी सेठी को भले भाव रे माइनिंग एक्सट्रैक्शन करा जाउची, प्रैक्टिस करा जाउची, इकोलॉजी केमती अच्छी, पोस्ट माइनिंग लैंड यूज केमती अच्छी, एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी केमती अच्छी। सो दीज आर कवर्स आरोह। तेणु तार प्रोफाइल को हमें each mine profile includes key closure activities, before and after photograph, post mining land use, and QR code like documentary videos। आरो जदि आपण देखिबे मेजर माइन क्लोजर इनिशिएटिव, प्रथम होची रिक्लेम, साइंटिफिक असेसमेंट एंड रिक्लेमेशन ऑफ क्लोज्ड माइंस जो गुडी को बंद ही जाई छी। सस्टेनेबल एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड पोस्ट माइनिंग डेवलपमेंट, Subical digital mine repurposing tool supports planning and utilization of closed mine mined। Subical Sambat, the platform for stakeholder situation and knowledge sharing on mine repurposing। Okay, and the Artha framework जो देखिए, framework for sustainable people centric mine closure plan। तो बेसिकली माइनिंग को नहीं की, जो माइनिंग क्लोजर को नहीं की सरकार किसी माइनिंग रो एक्सट्रैक्शन बंद कर दउचंदी, पुणी नुआ जगह खोली दउचंदी, से जिनस विषय अनअवेयर अछंती। तेणु से कहगला जेटा को रिपोर्ट जो अच्छी इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सेटा को पब्लिक करा जाऊ, पब्लिक डोमेन में रखा जाऊ, सो दैट दे विल हैव मोर इंफॉर्मेशन, राइट। मिशन वत्सालय स्कीम, मिशन वत्सालय हूँ गोटे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहले कौन ना, शेयरिंग रे आपनकर अछि, सेंट्रल सेक्टर हेतिले 100% यूनियन गवर्नमेंट फंडिंग करथा। जेते एटा शेयर स्पॉन्सर्ड स्कीम, एठी आपनकर डिवाइड हबो रिस्पांसिबिलिटी। को मिनिस्ट्री द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, and it is implemented by states and UTs। Provide care, protection, rehabilitation, reintegration for the vulnerable children। तेणु वत्सालय हूँ केयर, प्रोटेक्शन, रिहाबिलिटेशन जो वल्नरेबल चिल्ड्रेन अच्छे से केयर, प्रोटेक्शन, रिहाबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन, children in need care protection, children in conflict with law, missing and vulnerable children। So it will enhance the child protection ecosystem under the Juvenile Justice Care and Protection of Child Act 2015। क्लियर अच्छे। मिशन वत्सालय स्कीम सर्विस देखो, मिशन वत्सालय सपोर्ट्स इंस्टीट्यूशनल केयर, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, फैमिली बेस्ड रिहैबिलिटेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, रिस्टोरेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन इनटू सोसाइटी। सो बेसिकली यार काम हूँ जो वल्नरेबल सेक्शंस अच्छा चिल्ड्रन कम्युनिटी से डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल केयर, सपोज कौन संस्था से जो मैंने दे हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स से केयर नबे, से नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर संस्था को छाड़ी बाकी समस्त भी फैमिली बेस्ड रिहैबिलिटेशन
सो बेसिकली अडॉप्शन भी आम देखुचे, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, ये सब जिनस गुड़िक की प्रोविजन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस। जुवेनाइल जस्टिस को लेकिन आप जानी काफी डिस्कशन हो जुवेनाइल जस्टिस को लेकिन सुप्रीम कोर्ट तरफ गोटे कमेंट करा रिगार्डिंग आप कहींपर तार जो रोमियो जूलियट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने जो मैंने मेन से लिखुंट से काफी इंपोर्टेंट। प्रथम जिनस हूँ रिहाबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन। तेणु रिहाबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट। Rehabilitation should be based on the individual care plan and family based care. Okay, बेसी difficult देखिବାକୁ मिलुଛି। Restoration of the child is the primary responsibility of child care institutions. Registration of the child care institution, mandatory registration of all CCIs applies to government run institution and NGOs, non-voluntary run institutions। 42 रे आपन को मिली जिवो पेनल्टी। ओके, एठी आपन को पेनल्टी मिली जिवो, एठी रजिस्ट्रेशन ऑफ द चाइल्ड इंस्टीट्यूशन मिली जिवो। इवैल्यूएशन को देखिबे सेक्शन 55 रे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट may provide evaluate under judicial juvenile justice board, child welfare committee, special juvenile police unit, registered institutions and fit facilities and persons। नेक्स्ट को नेक्स्ट हूँ इंस्पायर प्रोग्राम, इनोवेशन इन साइंटिफिक परस्यूट, साइंस परस्यूट ऑफ इंस्पायर्ड रिसर्च। ये हूँ फ्लैगशिप प्रोग्राम कहार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आइडेंटिफाई, अट्रैक्ट, नर्चर, रिटेन टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन साइंस एंड रिसर्च, ये सब आपनकर इंस्पायर प्रोग्राम रो पार्ट। 4 कंपोनेंट्स ऑफ इंस्पायर, full form, million minds augmenting national aspiration and knowledge, target students of class 6 to 12, encourages original ideas, scientific creativity and grassroots innovation। ओके, सो इंस्पायर हूँ आपनकर कौन ना 6 रु 12 क्लास पर्यंत टार्गेट ग्रुप अच्छा सेठी ओरिजिनल आइडिया, साइंटिफिक क्रिएटिविटी एंड ग्रासरूट इनोवेशन को प्रायोरिटी दिया जाउछ। इंस्पायर इन केस ऑफ स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स परसुइंग अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट नेचुरल एंड बेसिक साइंसेस सेमान को मध्य स्कॉलरशिप दिया जाय। इंस्पायर फेलोशिप, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाउथला गुरु, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट, एबे मध्य से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करिवो। फेलोशिप ड्यूरेशन रहिबो 5 इयर्स, 5 वर्ष भितर आपको कंप्लीट करने को पड़ो। इंस्पायर फैकल्टी ओनरशिप सॉरी फेलोशिप, सपोर्ट्स आउटस्टैंडिंग पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च, enables independent research through fellowship and research grants। इनोवेशन प्रमोशन देखो इंस्पायर माने डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन, स्टेट लेवल एग्जीबिशन, नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोटेक्ट कंपनीज। सो बेसिक जिनस हूँ आपंकर कौन यस बेसिक जिनस हूँ कौन ना इंस्पायर जो आपंकर स्कीम टी अच्छी प्रोग्राम टी अच्छी से हूँ आपंकर अट्रैक्ट, नर्चर एंड रिटेन talented students in the scientific research, science and research। री-एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर सीनियर सिटीजन्स देखिबा कोन ना नेशनल करियर सर्विस जो आपनकर अछि से गोटे री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर सीनियर सिटीजन पाई क्रिएट करिछि फॉर जो मैंने ऑलरेडी रिटायर्ड हो सारे पुणी थे कम करने को चाहूँगी या से मैंने कंट्रीब्यूट करने को चाहूँगी एक्सपीरियंस को गोटे पोर्टल ओपन करा नेशनल करियर सर्विस रे।
2015 रे एटा ऑलरेडी लॉन्च करा जाइतिला। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित इंटीग्रेट करा जाइछि जॉब सीकर्स, एम्प्लॉयर्स, करियर काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट, जॉब फेयर्स एंड एम्प्लॉयमेंट सर्विसेस। मॉडल करियर सेंटर देखंतु 407 मॉडल करियर सेंटर अप्रूव हिची, established in collaboration with the state government and educational institutions. Services include job fair, career counseling, training, employment assistance through NCS portal. Okay, so these are part of the services. Government strengthens educational opportunities for OBC, EBC, and DNT students through PM YSOC. Full form: the Prime Minister Young Achiever Scholarship Award Scheme for Vibrant India. The Umbrella Scholarship Scheme of the Ministry of Social Justice and Empowerment reduce financial barrier and promote inclusive, equitable and quality education. एठी भी यशस्वी बनैबा पई एजुकेशन रा आवश्यकता रही एवं गोटे स्कॉलरशिप स्कीम अछि ता अंडर रे ही आपनकर कहा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। टारगेट बेनिफिशियरीज काहाकू ना अदर बैकवर्ड क्लास को बेनिफिट मिलिबो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एंड डीएनटी denotified nomadic and semi nomadic tribes. ऑब्जेक्टिव कौन रहिबो देखंतु क्वालिटी एजुकेशन, फाइनेंशियल हार्डशिप कमिबो, increase enrollment and retention of disadvantaged students, ensure equal educational opportunities and support school and higher education. Different components गुड़िक देखो, 4 scholarship, pre-matric scholarship scheme at the school level, before class 10, post-matric scholarship after class 10, the class education in school schemes and the class education in college schemes. Encourages educational advancement among disadvantaged communities. Educational advancement among the disadvantaged communities helps reduce educational inequality, promotes social justice and inclusive development, contributes to human capital development by enabling students to pursue quality education without financial constraint. Okay. Supreme Court appointed Aravali's panel consultation process excludes rural people, says environmentalist. But High-Court committee Supreme Court form करिकी कहितला कि सेंट्रल गवर्नमेंट तार रिपोर्ट दबा एवं Aravali रेंज जो डेफिनेशन अछि ताको मध्य दबाक पड़िबो। And report or submission on deadline 31st August 2026. Concerns raised by the environmentalist and activist. आपनकर मने थिबो आरावली रो जो डेफिनेशन थिला 100 मीटर रु ऊर्ध्व थिबा पहाड़ गुडी को कंसीडर करा जाउतला। अच्छा 100 मीटर पहाड़ ऊपर को माने सेठी कोनोसी डैमेज हबो नाही, ता तळ को डैमेज हो। फर्दर फार्मर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट वाला आसिले ये तो 100 आपनकर 100 मीटर पर्यंत सेठिकार जो एक्सपर्ट्स माने कहिले जो डेफिनेशन 100 मीटर पर्यंत रखा जाइछि that covers 85% of the area of Aravali. कारण एटा गोटे प्लाट्यू माउंटेन
ତେଣୁ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନଲାଇନ୍ only consultation process reached rural communities, tribal populations, and people with limited digital literacy. Need for offline consultation. Suggesting include display public notices in local languages, panchayat bhavan, community hall, government schools, Anganwadi centers, cover Arabali districts across 5 states. Short consultation period, only 21 days. Critics argue the period is insufficient to reach remote villages, collect meaningful community input. Okay. ତେଣୁ ଯେଉଁ ସର୍ଟ କନସଲଟେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ସେଠି ଇଏ withdraw କରିଦେଇଛି. Demand for field visits. Activists urged to committee to visit village in Arabali region, impact directly with the affected communities. Okay. Demand for field visit. Illegal mining concern ମଧ୍ୟ ଅଛି କାରଣ ରେୟାର ଅର୍ଥ ମଟେରିଆଲ କାଫି ଅଛି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛି ତେଣୁ ସରକାର ସେଟାକୁ କିଛି ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବ କିଛି ଲିଜରେ ଦେଇଦେବ. ହରିୟାଣା ରାଜସ୍ଥାନ ଗୁଜରାଟ ଏ ସବୁ ଏରିଆରେ କଭର ହେଇକି ଅଛି. Why Aravalli range is important? One of the oldest fold mountain ranges. Gujarat, Rajasthan, Haryana, Delhi ये हूँ तार पाखापाखि अंचल. Act as a natural barrier against the eastward spread of the Thar desert. Supports rich biodiversity and wild habitat. Important important groundwater recharge zone, and regulates regional climate and helps control soil erosion. तेणु आरावली एक तो डेजर्टिफिकेशन हमको प्रोटेक्ट करुच्ची. आरावली डिजर्टिफिकेशन टुवर्ड्स दिल्ली आपण कहि परिबे माने ईस्टर्न पार्ट गोटे फोल्ड माउंटेन एटा एवं फोल्ड माउंटेन है अच्छी किंतु से धीरे धीरे प्लाट्यू हो गलानी जोटी प्लाट्यू अच्छी माने से जगह आपनकर चांसेस अच्छी रेयर अर्थ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेस बाहर करा जाई पारे. ओके नेक्स्ट MCQs गुडी को देखिए. PM Vikas scheme is implemented by which ministry? Minority Affairs. Samudra Pradakshina. Mahe class. Mining closure and reporting. Innovation grants to school student. The Supreme Court appointed Aravalli panel has been constituted. The review the definition and delineation of the Aravalli hill range. ओके तो ये थला आपनकर आज डिस्कशन. तेणु जदि चाहूँगी एनरोल करें बाय यूजिंग द कोड JN Live. PDF आपको टेलीग्राम रे मिल जाए. थैंक यू.